leaves us with two teams, KKR and DC. KKR, the defending champions, and DC, who in fact brought in KL Rahul as well. They already have a Akshar Patel. There's a management change as well. So Rudran shall kick this off with KKR. As something we were discussing, that KKR also very much similar to RCB. They don't have much captaincy options or obvious captaincy options, so to speak. Yes, Ajinkya Rahane, Venkatesh Iyer seem to be the front runners. Rahane has captained in the past multiple teams. In fact, Rajasthan Royals also. So, do you think how are they going to go about it for KKR? Because it's very difficult predicament for them. They're the defending champions. That let go of Shreyas Iyer. Gautam Gambhir is out of the setup. A lot of KKR, the first choice players are not there, and then you're left with not many options. And Andre Russell, Rinku Singh, Sunil Narayan, all great gun players, but not really in that captaincy mold. How do you think KKR will go, or whatever we saw today with the RCB is a hint of what KKR might be thinking also? I think for KKR, I think it's less tricky because they have a very obvious choice in Venkatesh Iyer. It's not just it's not about his domestic experience and everything. It's just he was the vice captain last year when Nitish he has been the vice captain. He has been the leadership group, and it's like they spend so much money on him, and he is a very loved player in the dressing room. There's everyone who has spoken about him, who has been with him, and he's a very loyal member of that KKR franchise. Even before the auction, he was saying that I would really want to go back to the team, and they gave him that respect by spending so much money on him. I think it's a very easy choice, and it's if they're delaying it, I don't know why. What is the reason behind delaying that call? But if the other options in my mind are Ajinkya Rahane and Rinku Singh. अजिंक्य रहाणे आई डोंट लाइक एट ऑल बिकॉज उनके पास कुछ एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस इज द ओनली थिंग ही हैज उसके अलावा ही इज नॉट डिस्पाइट द रीसेंट सईद शाकिल ट्रॉफी ही इज नॉट दैट he's not a great T20 player who would give you consistently 2 3 years that you can rely on. And especially if you're picking a captain, he should be someone who is a short starter in the 11. And I don't think even with the batting issues, I don't think Rahane is that. Plus, Rinku Singh, I think Rinku Singh is a very good option. Same as Venkatesh Iyer. He's very loyal and he has some captaincy experience as well. But I think after a point, I think it will be about who the team discusses, and like RCB said they went about how discussing with players and discussing getting the feedback from players on what each player is like. I think it will depend on that, but I think Venkatesh Iyer peps Rinku Singh for me in that regard, and I think they should just get over with it, announce it, and get over with it. Yeah, announce and get over with it. Harshit, I'd like to bring you in here. Do you think KKR very similar to RCB really bungled up at the auction trying to go for a captaincy option and they really couldn't get anybody? And hence, settle for whatever they got. And I think even if I'm not wrong, Ajinkya Rahane was a very late pick also, and it made little sense in that way. And we all were thinking, during the auction that Rahane's pick is could be, they're looking for a captaincy option, so they just wanted to have that backup that if nothing works out in their plans, we'll give it to Rahane. Because that very late pick of Rahane at the auction didn't make sense, and even looking at that squad, there's nobody. But there's one name that I would like to bring out here is somebody like a Quinton de Kock, uh, former South African captain. He's not playing international cricket anymore. Left-hander at the top of the order, wicketkeeper. Maybe that's a gamble that they might want to take. Harshad, your take. See, like we discussed about कि अजिंक्य रहाणे का प्लेस स्टार्टिंग 11 में कंफर्म है मुझे नहीं लगता क्विंटन डिकॉक का भी कंफर्म है क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज सिमिलर सॉर्ट ऑफ विकेट कीपर बैट्समैन ओवरसीज प्लेयर ओपनिंग बैट्समैन और लास्ट सीजन भी रहमानुल्लाह गुरबाज उनके पास थे 23 ईयर ओल्ड जिसपे फ्यूचर फ्रेंचाइजी इन्वेस्ट कर सकते तो मुझे लगता है कि शायद क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज का एक फाइट है तो मुझे वही चीज मैं एग्री करता हूँ रहाने रहमानुल्लाह गुरबाज और क्विंटन डिकॉक का एक फाइट है ओपनिंग स्लॉट के लिए तो मुझे लगता है सेम रीजन वो श्रेयस अय्यर वो अजिंक्य रहाणे वाला है कि कैप्टनसी का वो एक फैक्टर है बट देखिए मेरा चॉइस तो आपको पहले दिन से पता है कि केकेआर का कैप्टन कौन होने वाला है मैं रिंकू सिंह को कैप्टन देखता हूँ ठीक है रिंकू सिंह को देखने के दो रीजन है मेरे पास पहला रीजन ये कि केकेआर के लिए उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है
सेकंड Would be रीजन है such a great goodwill gesture, no? KKR का stock value in terms of goodwill इतना ऊपर चले जाएगा. another reason is he was the first choice retention. You had an option of retaining Venkatesh Iyer as well, but you chose to retain Rinku Singh. You chose to retain somebody like Varun Chakrabarti, Harshit Rana, Ramandeep Singh, even though last two were uncapped players over Venkatesh Iyer, right? There was no cap कि आपको इतने ओवरसीज करने हैं उतने फॉरेन करने हैं, आपके पास सब ऑप्शन थे. डिस्पाइट दैट केकेआर मैनेजमेंट ने आपने रिंकू सिंह को फर्स्ट चॉइस बनाया, तो ही वाज देयर फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस, ही वाज अ पार्ट ऑफ देयर प्लान्स. एंड ऐसा नहीं है वेंकटेश अय्यर को रिटेन नहीं किया. वेंकटेश अय्यर 2022 मेगा ऑक्शन से पहले उनके रिटेंशन लिस्ट में थे. शुभमन गिल के ओपन को रिटेन किया गया था. ठीक है, तो ये रीजन था मेरे लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि रिंकू सिंह केकेआर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड केकेआर को शायद उन्हें कैप्टन अपॉइंट करना चाहिए. यंग है और उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा निखर के आएगी अगर वो कैप्टन बनते हैं. कैप्टनसी एक्सपीरियंस है, उत्तर प्रदेश को कैप्टन किया था विजय हजारे में, ही वाज द कैप्टन. और जहां तक रही बात वेंकटेश अय्यर के साथ, मुझे देखिए दो प्रॉब्लम्स हैं. देखिए दो प्रॉब्लम्स ये हैं, एक तो उस बंदे का प्राइस आपने 23.75 करोड़ देके उसको बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सपेक्टेशंस में डाल दिया है कि आपको तो भाई डिलीवर करना ही है, हमने आपको इतने पैसे दिए हैं. और आईपीएल में हमने देखा है यार, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो आपको अगले सीजन फ्रेंचाइजी बेच देती है, फिर आप श्योर सस्ते दामों में मिल जाते हो. ठीक है, तो केकेआर ने अगर 23.75 करोड़ वेंकटेश अय्यर को दिए हैं और जिस तरह का आईपीएल ऑक्शन रहता है, तो मतलब अगर किसी आप प्लेयर को 24 करोड़ दे रहे हो, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो 500-600 रन का सीजन, और अगर वो ऑलराउंडर है तो 400-500 रन का सीजन, कम से कम 15 विकेट. वेंकटेश अय्यर वो करके दे सकते हैं? आई एम नॉट श्योर. मैंने उनको 4 सीजन देखा है. 2021 ही वाज गुड इन द सेकंड हाफ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं. उसके ऊपर आप उन्हें कैप्टनसी का प्रेशर देके एक और एक्स्ट्रा बर्डन देना चाहते हो. बीइंग अ डिफेंडिंग चैंपियंस, केकेआर पे स्पॉटलाइट होगी और ऑलमोस्ट सिमिलर स्क्वाड. श्रेयस अय्यर नहीं है, गौतम गंभीर नहीं, बट ऑलमोस्ट अ सिमिलर स्क्वाड उन्होंने मैनेज कर लिया रिटेन करने का. तो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगे. तो मुझे नहीं लगता कि केकेआर मैनेजमेंट एक प्लेयर जो ऑलरेडी इतना बर्डनड होगा प्रेशर परफॉर्मेंस अपने प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए, उसको एक और प्रेशर दे देगी. ठीक है, मैं मानता हूँ कि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के साथ भी सेम चीज लागू होती है कि उनके ऊपर भी बहुत सारा प्राइस था, उनको भी कैप्टनसी दी गई है, बट दे हैव डन इन द पास्ट एज वेल एंड दे आर प्रूवन परफॉर्मर्स. ठीक है, चाहे और वो ब्रांड वैल्यू भी डिफरेंट लेकर आते हैं बिल्कुल वेंकटेश अय्यर के स्किल सेट से. और आपको भी पता है कि अगर वेंकटेश अय्यर इस सीजन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है, तो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट उनको मीम्स ट्रोलिंग दी जाएगी. और ये जो सारा हेड स्पेस जो क्रिएट होता है सोशल मीडिया से, चाहे कितनी बात कर ले सोशल मीडिया से दूर रहो, वो अपने आप को मेंटल टोल देता है. तो आई एम नॉट श्योर कि केकेआर फ्रेंचाइजी ऐसा कुछ उनके ऊपर डालना चाहती है. देखिए प्राइस ज्यादा हुआ है तो उसकी वजह से लोगों को लग रहा है, बट मेरा पॉइंट वही है कि प्राइस एक तो ऑलरेडी ज्यादा, ऊपर से आप एक और चीज डाल लोगे. आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ ग्रेट, दैट वुड बी अ ग्रेट मूव. और जहां तक रही बात कैप्टनसी ऑप्शन की, देखिए अजिंक्य रहाणे एक ऑप्शन तो है, अच्छा परफॉर्मेंस है, एक सीनियर प्लेयर है, बट सीनियर प्लेयर ही है. आप स्टार्टिंग 11 में शायद वो जगह डिजर्व नहीं करते. और जहां तक रही बात दो वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स जो आपके पास है, ऑलराउंडर्स जिनको मैं बोलता हूँ सुनील नरेन और अंडर रसल, देखिए अगर वो कैप्टनसी तो नहीं देंगे, 35-36 जब वो हो चुके हैं तो नहीं देखेंगे. फ्यूचर आपको अगर आपको आप 3 साल के लिए अगर कैप्टनसी किसी को देखते हो, तो मुझे लगता है कि आपके पास एक ही ऑब्वियस ऑप्शन है, दैट इज रिंकू सिंह. आप किसी चीज पे आर्ग्यू नहीं कर सकते. रिंकू सिंह शायद अभी नंबर 6 पे खेलते हैं, अगर आप उन्हें कैप्टन बनाएंगे तो शायद वो नंबर 4 पे अगर आके खेलना शुरू कर देंगे. वो क्रिकेटर है जो 500-600 रन का सीजन दे सकता है. तो अगर आपके लिए वो 500-600 रन का सीजन दे सकता है, देखो नंबर 6 पे तो 600 रन का सीजन कभी नहीं आने वाला है, पर अगर वो नंबर 4 पे आके खेलता है या नंबर 5 पे आके खेलता है या 4 पे आके खेलता है, स्पेशली जैसे हार्दिक पांड्या अपने गुजरात टाइटंस में जब वो खेलने गए थे, नंबर 4 उन्होंने अपने लिए रोल चूज किया था एंड ही वाज द लीडिंग रन स्कोरर फॉर गुजरात टाइटंस इन द फर्स्ट सीजन दैट दे वन द टाइटल एज वेल. सेम गोज विद रिंकू सिंह एज वेल. अब आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि रिंकू सिंह, अरे नहीं रिंकू सिंह को कैप्टनसी क्यों ये वो, बट हार्दिक पांड्या के साथ भी सेम चीज थी. ही हैज नेवर कैप्टन. हार्दिक नहीं पांड्या ने नहीं, एडमिट किया उसमें उसमें एक इश्यू मेरे को ये लगता है कि द पॉइंट ऑफ यू मेकिंग कि रिंकू सिंह नंबर 4 पे आके खेल के, डज ही हैव द गेम टू प्ले एट नंबर 4 इज माय क्वेश्चन. Does he yes yes have he the has game done to well. play at number 4? हाँ, At least in the T20 format is what my question is. And right, I mean you're right. I agree with you. Ki Rinku Singh might as well make a choice, but then again I do have a question here. Ki the same expectation, the burden of expectation जो आप वेंकटेश अय्यर के बारे में बता रहे हैं, the same would be on somebody like Rinku Singh also, right? So that's a catch 22 situation for KKR कि आप चाहे वेंकटेश अय्यर पे जाएं, चाहे रिंकू सिंह पे जाएं, where pressure of expectation, the burden of expectation would definitely be there on these two guys who, again, on paper are your best players. Do you want to burden them, or
make way or make a place for somebody like Ajinkya Rahane to take up that burden and free your two best players and not give that captaincy, because इसमें brand और इसकी कोई बात नहीं है. Again, we have discussed this about the captaincy. It's more of what the backroom thing is about in terms of captaincy, and you need a face. So that is my thinking with regards to have anybody for that matter and not have a Venkatesh Iyer.